परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महभ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। हम भगवान के अनुग्रह से ये वेदांत का जो बेसिस कॉन्सेप्ट है उसके बारे में विचार कर रहा था। लास्ट टाइम जो है अभी हम अध्यास भाष्य को देख लिया और अवस्थात्रय प्रक्रिया जो है उसका भी हम देख लिया। आगे हम वो 5 विषय जो है वेदांत जानने के लिए जो प्रमुख विषय है उसको जानना है। उसके पहले what I thought to conduct that study circle on Avastatraya and as well as Adhyasa Bhashya where we left out. Okay, so we saw the Adhyasa. What is Adhyasa? Why Adhyasa is in our Adhyasa, that is misconception, is in our own experience and ये सार्वत्रिक सभी को ये गलत समझना आ गया है। वो नेचुरली है हमारे पास, स्वाभाविक से ये है अध्यास है। मतलब क्या, हम परमात्मा को, ये सभी परमात्मा है, उसके बदले में हम ये प्रपंच देख रहे हैं। परमात्मा में हम प्रपंच को देख रहा है, वो ही अध्यास है, गलत समझना, misconception. Also we saw different levels of Adhyasa. In also study circle also we saw the same. So now we have to continue with that. Okay. So ये जो प्रपंच का व्यवहार है ना, ये प्रपंच का व्यवहार, so activity in this world, is it in the realm of Adhyasa? ये प्रपंच का ये व्यवहार जो है ये अध्यास का क्षेत्र में या है या नहीं? शिवांश? यस सर, है। है। कैसा है? कैसे एक्सप्लेन करना सर? एक बार क्वेश्चन यही है ना आपका कि जो प्रापंचिक व्यवहार जो है ये अध्यास का क्षेत्र में है या नहीं? आप बोला कि हाँ, है। कैसा है? क्योंकि सर यहाँ पर जो एक्चुअल स्वरूप है जगत का वो हम नहीं देख सकते हैं। मतलब हमें हमेशा जो मतलब एक फॉल्स अपीयरेंस होता है कि वो कुछ और है जो वो उसका असली स्वरूप नहीं है, मतलब मतलब रियल नेचर नहीं है। ठीक है, वो भी है, पर you have to further explain on that. Why our daily व्यवहार, प्रापंचिक व्यवहार is in the realm of अध्यासा? स्मृति, can you? अविद्या वही। कैसा? वही। गलत समझाने के लिए क्या क्या चाहिए? अभी एक एग्जाम्पल लेकर बोलिए। अभी व्यवहार चलने के लिए क्या क्या चाहिए? सर इसका मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता। स्मृति आपका वॉइस थोड़ा ज्यादा बढ़ना है, आपका वॉइस कम है, मतलब बोलना ही कम है, नेटवर्क के बारे में नहीं। ठीक है, श्याम। For any activity to happen in the life without adhyasa, it cannot proceed because how? Yeah. Firstly, I me myself are imposed on the body. Without that, any physical activity or interactions we cannot undertake. Correct. So the sharirika adhyasa, manasika adhyasa, which means the mental faculty also, we take a position in that, and similarly we take position in the indriya
vrittis as my action and speak from there. So that is the adhyasa. For me to interact and transact with the worldly things without adhyasa, we cannot take a standpoint of the individual I. Yeah, good. Yeah, you have explained it properly. But the thing is, I will just clarify on by proper means. See, so in our गाढ़ निद्रा सुषुप्ति निद्रा में अध्यास नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है मतलब प्रापंचिक का जो वस्तु जो है कुछ भी नहीं है. हम केवल आत्मस्वरूप में हम विलीन हुआ था. उसमें वहाँ अध्यास नहीं है. बट इन वेकिंग और ड्रीम स्टेट, so there will be the me notion. So identification of myself, मैं शरीर मन और बुद्धि, ये आइडेंटिफिकेशन के बाद इसका रिलेटेड हुआ प्रपंच हमको दिखता है. And there is a triputi. So what is that triputi? Triputi, three things. Jnana, Gyatro, Gneya. and Correct. Gnana, Gnatro, Gneya. Knower, means of knowledge, known, the thing which need to be known. Pramatru, Pramana, Prameya. That is called Triputi. Okay. So this should be there. So without this, we can't imagine any kind of activity in the world. For example, if in the school, if teacher calls an attendance, if they tell your name, you will tell, I am there, I am present. That means what? You identify with your body and you will tell that I am present. So likewise, any other activity you take, without this misconception, all the entire world activity will not going to happen. So that's why that Paramartha, okay, Smriti and Shivansh, you should be very careful. Okay, so in the study circle, whatever doubts you have to get clarified. So because if you can't understand or if you have got any doubt, it future Vedanta, it will be difficult for you to learn or analyze or सर contemplate. स्मृति का मैसेज आया कि वो उसका नेटवर्क इशू है अभी, बट वो फिक्स कर लेगी. फिक्स करेंगे. ओके, वही. सो क्योंकि ये अध्यास का विचार जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका समझना और अवस्थात्र विचार का समझना बहुत जरूरी है. सो ज्यादा के ज्यादा लोग इसको इग्नोर करता है, इसलिए वो वेदांत को भी गलत समझता है. इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है. दैट्स वाई ये परमार्थ जो है, सो परमार्थ मतलब क्या है? परमात्मा का स्वरूप जो है ये व्यवहार से अतीत है. ये जो व्यवहार जो है उससे अतीत है. मतलब अतीत मतलब क्या? उससे बियॉन्ड, और उसका सबस्ट्रेटम है. उसके बिना ये प्रपंच नहीं रहता है और ये प्रपंच में नहीं है. परमार्थ जो है ये प्रपंच का so it is not in the आधार में नहीं है. वो परमात्मा का आधार से ये सभी प्रपंच है. प्रपंच के आधार से परमात्मा ही है, परमात्मा नहीं है. ये जो सारे कंट्रोल, ये सारे चैतन्य प्रपंच का जो है वो परमात्मा से ही आ रहा है. इसलिए ये प्रपंच मतलब ये सारे चीज, ये प्रपंच का सारे चीज जो है हम मन से हम विचार कर सकता है, पर ये परमात्मा जो है हम मन से विचार नहीं कर सकता, क्योंकि ये मन जो है उसका सोर्स ही परमात्मा है. ठीक है. ओके, सो नाउ that is about the प्रापंचिक व्यवहार. When it comes to शास्त्रीय व्यवहार, can someone tell what is शास्त्रीय व्यवहार? How different is from लौकिक व्यवहार?
Shruti Pradhana Vyavahara. What has the Shruti told us to perform in the Shruti as well Agamas? as Shruti, Smriti or Purana or whatever. Shastra. That is Shastra. Yeah, What is instructed in Shastra, that is called Shastriya Vyavahara. So that will not come just by the Laukik sense. So Sir, that is called does Boli. Shastriya Vyavahara mean actions that are described by Shastras? Instructed in Shastra. So example, Okay. so Sham, can you tell the example of Shastriya Vyavahara? What category of Shastriya Vyavaharas? Vihita karmas in the Nitya karmas and What is Nitya Karma? Jata karma, Nama karma, What is Nitya Namakarna. Karma? Nitya Karma, what is Nitya Karma? What are all the Nitya Karma? What are all the different examples of Nitya Karma? Sandhya Vandana, Devata Puja, Japa. Bhajana, Bhajans, Japa, Whatever we have to do Satsanga. daily. Whatever daily, the satsanga and all are optional. So the daily what is imposed to do for all the varnas. So even for Shudras also there is Nitya Karma. So there is a misconception that for Shudra nothing is there, but it is there. So but it is different. It is simplified version for the Shudras. So Brahmanas it is very difficult. So but we are not practicing, that is different story. But it is difficult. So because earlier days, so Veda Dhyana, after doing the Veda Dhyana only, they were supposed to have some food. It was used to take some 12 o'clock in the noon. So before that, they have to get up early in the morning and they have to do the Veda Dhyana, which is there in our which is there in their shakas, and they have to complete everything, and then only they were supposed to have food. Okay, anyway. So that is on the Nitya Karma. Another category, what is that another category? One is daily performing. Another? Kamya karma. Like Kamya, before that. Kamya before that. Naimittika Karma. Naimittika Karma. What are all the Naimittika Karma? Nimitta. So it comes by some nimitta. For some reasons. Namakarna, Jatakarna. Yes, correct. Jata Karma, Namakarna, Shraddha, and all the festivals due to some nimitta. नरकासुर वधा. सो इसके लिए नरक चतुर्दशी आया है और अमावस्या. So these are all the nimitta. So due to some reason it has come. Okay, that is nimitta karma. Sir, first was Nitya, right? Nitya karma. Then That Nimitta. नैमित्त. निमित्त से आने वाला कर्म नैमित्तिक कर्म. निमित्त कर्म नैमित्तिक. एक बार डिफरेंस बता दीजिएगा. Difference. Some difference. Can you explain, Sham? Just now I explained, no? Yeah, Nitya karma is performance to be done daily in a continuous basis, such as the japa, dhyana, sandhyavandana, and such karmas. Naimittika karma is shraddha, amavasya tarpana, and festival celebration and things like that. It will not come daily. Due to कुछ कारण से आता है. निमित्त मतलब क्या है? कुछ कारण. ये अमावस्या पूर्णिमा एक कारण है, और ये श्राद्ध कर्म जो है ये एनुअली आता है. श्रद्धा से करने वाला श्राद्ध कर्म पितृलोक को तर्पण करता है ना, वो निमित्त से आने वाला कर्म है. और क्या नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म. अनदर वन, Sham, just you told, no, before that? Kamya karma. Kamya karma. What is that Kamya karma? In anticipation of something, you perform Vedic rituals. Correct. As name indicates, it is Kama. So Kam se. Kam matlab kya hai? Examples, Sham? Putra kamishti yaga. Putra kamishti yaga. So whatever. So if you want to go to the heaven after death, that also a Kamya karma. Different variety of Kamya karmas are there in this world. So if I want to tell a simple example, we go to the temple, we will pray that for some to have something. That is also a Kamya karma. So we will perform some rituals. So वो बारिश आने के लिए भी ये यज्ञ करता है, वो भी काम्य कर्म होता है. ओके, काम रहता है उसका. To satisfy that, we'll do some karma, that is called Kamya karma. So these are all the
शास्त्रीय कर्म, शास्त्र से imposed हुआ कर्मास. Okay, so these are also in the realm of avidya. Okay, so how? शिवांश ये बोल सकता है कैसा है? वो लौकिक कर्म जो है वो गलत, वो क्या, वो वी अंडरस्टूड, बट ये शास्त्र से आया हुआ कर्म है. ये शास्त्र से आया हुआ कर्म वो भी अध्यास का क्षेत्र में ही है. क्यों? क्योंकि सर उसमें भी ट्रू सेल्फ का नॉलेज नहीं मतलब ओके, नहीं ठीक है, होता है. वेरी गुड. ट्रू सेल्फ का नॉलेज उसमें भी नहीं है. और वहां लौकिक व्यवहार जैसा वहां भी क्या रहना चाहिए? अध्यास. अध्यास रहना चाहिए. कैसा? ये त्रिपुटी वहां है या नहीं शास्त्रीय कर्म में? ज्ञातृ ज्ञाना ज्ञेय. वही भी है. वो त्रिपुटी जो हम्म. है शास्त्रीय कर्म में भी है. पर यहाँ अलौकिक कर्म में क्या होता है, इसके बारे में वो ये शंकराचार्य ने बृहदारण्यक उपनिषद का इंट्रोडक्शन में, so he will tell very nicely. So that is called Sambandha Bhashya, that I will take after completing this 5 concept, that I will go through the entire Sambandha Bhashya. He has told what is the difference between Laukika karma, Shastriya karma and Paramarthika sadhanas and all he will mention. So here also the triputi is necessary. So because so one has to think that I am this body. So for this body, so I have this karma. So one who has realized, so he will not be having any karma. That is because there is no anything apart from him. कुछ क्या उस परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है. ज्ञानी के विषय में बोलना है तो. पर शास्त्रीय कर्म करने वाला जो है उससे एज यू टोल्ड अध्यास रहेगा. इसलिए वो सोचेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हो, शूद्र हो. सो शास्त्र में ये कहा है मुझको, ये करने से मुझको अच्छा होगा, मेरे फैमिली अच्छा से रहेगा. ये सभी होने के लिए अध्यास रहना चाहिए और त्रिपुटी भी रहना चाहिए, क्योंकि उसमें फल होता है. वो भी प्रमाण क्या होता है? शास्त्र प्रमाण होता है. यहाँ ये लौकिक कर्म में हमारा जो इंद्रिय जो है, सेंस ऑर्गन्स, वो प्रमाण होता है. यहाँ शास्त्र ही प्रमाण होता है. ये प्रमाण, it is solid pramana in the laukika. Okay, so that is not solid pramana, that is it is based on belief, श्रद्धा. हम श्रद्धा से करता है. ये तर्पण करने पर, सो ये तर्पण क्या है, ये पानी डालना, ये तर्पण क्या है, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि वो शास्त्रीय कर्म है. सो उस श्रद्धा आता है. सो क्योंकि श्रद्धा मतलब ऐसा नहीं है कि ये जस्ट माइंड मियर बिलीफ. सो इट इज नॉट लाइक दैट. प्रक्रिया है. वो देवता लोग ये, क्योंकि ये अपार कर्म जो है श्रद्धा का, उसके बारे में बहुत ज्यादा है. ये आदित्य, रुद्र, so they all will come and take the tarpana. So those things and all there, but it is, if you want to understand, we have to learn that. If you can't learn, you just believe and do that. That's all you have to do. I told an example of mobile also. For to know the mobile, you need not have to study all the programs which is there in the mobile. You just use that. Like that, the Shastriya karma is also there. Okay. That is on that. Shastriya karma is also in the realm of Adhyasa. And another karma is there, which is called, ideally we shouldn't call it नैष्कर्म. Nishkarma is different. No. That Nishkarmiya, it is आत्मज्ञान ही निष्कर्मी है, उसके बारे में नहीं है. ये मोक्ष व्यवहार. सो मोक्ष व्यवहार नहीं बोलना है, क्योंकि ये व्यवहार नहीं है, पर उसका भी वो भी अध्यास क्षेत्र में ही है. कैसा? ये मोक्ष व्यवहार मतलब क्या है? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो शिष्य गुरु के साथ होता है ना, सो वो ये कैसे अध्यास में है? क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ अभी तक.
अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है। वो ये उपदेश शास्त्री गद्य भाग, उपदेश आचार्य ने वो ये प्रस्थान त्रय के बिना एक ही ग्रंथ लिखा है। एज पर स्वामी जी, वो लोग बोलता है ज्यादा बहुत बुक्स लिखा है, पर एक ही बुक हो गए उपदेश शास्त्री। इट इज रिटन बाय शंकराचार्य, इट हैज गॉट प्रोज एंड पोयम बोथ। सो उस गद्य भाग में ये लिखता है आचार्य ने, क्योंकि शिष्य जो है और गुरु भी, गुरु ज्ञानी होता है, पर शिष्य उसके पास आएगा तो सो ही हैज टू एक्सेप्ट, फॉर हिम देयर इज नो भेद नहीं है, गुरु शिष्य का भेद नहीं है, क्योंकि सारे परमात्मी हैं वो। पर शिष्य आएगा तो उसके सामने, सो ही हैज टू सुपर इम्पोज इन द सेंस, so it is not an misconception for guru. I'm telling from the standpoint of guru, from the standpoint of guru acharya who has realized in the self, for him there is no shishya difference nahi hai. But he can't just Gaudapadacharya also will tell that in the Karika. So he can't tell for the shishya, hey, nothing, so why you are coming to me, so everything is Paramatma, go. No, that will not happen, because for the shishya, सो दिस ये लौकिक में है वो अनर्थ जो है, लौकिक अनर्थ, ही इज एक्सपीरियंसिंग दैट। सो फॉर हिम, सो ही हैज टू एक्सेप्ट दैट ही इज इन द realm of avidya. So because for him it has not happened, so he has to accept that I am a teacher, as per shastra I am going to teach. And for a shishya, if you take, so he has not yet realized, and he has to first accept the fact that he is in avidya because of so and so, and also it depends on different levels, because more chitta shuddhi, if it is happens, so less time it will take for him to realize. Okay, but still, until unless you have taken standpoint in the self, that will be there. So because, so you can't say I have concept, I got the knowledge of rope 80%. You can't say that. 100% rope knowledge if you get, then only, so the misconception of snake will go. So like that, whatever might be your chitta shuddhi, unless and until you realize in the self, that triputi anyway, it will be there. So that also in the realm of avidya or adhyasa. These are all important factors, because when it comes to study of the Vedanta, these and all will be, you should be there in back of our mind. Otherwise, it will be difficult to understand. Okay, we should never forget this. We should never ever forget. If you won't forget in this birth, if we have next birth, there also will not forget these things. So it should be like that. So so then, okay, these are all the on the Adhyasa Kshetra ke bare mein. And I will ask one question. So this Adhyasa, so because in the example, so from the example only, so we always know the concept. Drishtans, first पहले दृष्टांत और द्राष्टांत होता है ना। ये दृष्टांत में आचार्य बोलता है कि विषय मतलब अंधेरा और रोशनी, अंधेरे के बारे में बोलता है, और सर्प और रज्जु, ही संस्कृत में सर्प और रज्जु, ये रोप और स्नेक, वो क्या होता है कि ये कुछ काल में शुरू होता है वो, क्योंकि वो रात अंधेरा था, अंधेरा में कुछ भी नहीं दिखता है, और पार्शियल अंधेरा somewhere around 4:35 in the morning, because there will be a partial andhera, partial light, partial, वही ही ये अध्यास हो सकता है रोप में सर्प का। ठीक है, वे हम बोल सकता है कि
मेरे को 4:30 को ये अध्यास हुआ था, ऐसा। पर ये अध्यास जो है हमारा, हमको सभी हुआ है ना, ये अध्यास कब शुरू हुआ? When did it started? उसी टाइम जब मतलब हम्म, आप वहां पे थे। हाँ, ये हमारा तो अध्यास गलत, क्योंकि एग्जाम में मैं जैसे बोला था, ये अध्यास कब शुरू हुआ? Parental conditioning onwards. पेरेंटल मतलब? When the parent gave you a name रज्जु and call you by name and makes you identify with the body and the name and things like that. सर्प वाला पूछ रहे हैं क्या? हाँ, सर्प वाला पूछ रहे हैं। वही। So parental name, okay. So parental, okay. So so we believe that before birth also we were there. So, but It is Sukshma Sharira. beginningless. So we believe Sukshma Sharira. So mind. So that will continue. If we would have born newly, so without any previous birth, so that I can accept Sham. So because we have taken rebirth, so before rebirth that was there, right? Yes. It is not only like after yes. birth it happened. yes. कब शुरू हुआ? Beginningless. अनादि अनादि अनादिरनंतो नैसर्गिको लोकोऽध्यासः. अजात. Acharya will tell. Anadiranato. I have got 2 points over, 2 answers over here. Anadiranato. So how we can tell? So okay, Acharya told in Adhyasa Bhasha, Anadiranato Naisargiko Adhyasah. So how can you validate that? So will you just believe that just because Acharya told that is Anadiranato, that means so there is no end or beginning or end for the Adhyasa. So how will you validate? How will you believe? So is it just a belief or it is there? ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಗು ನಾನು ನಂದು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾಸನ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಟೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್, ಆಚಾರ್ಯ or ಶಾಸ್ತ್ರ ಟೆಲ್ಸ್ we'll know that this is Adhyasa. So if you tell in the waking state, so that we can't take as an example, because we will not know that this is Adhyasa unless and until we realize. So we have to take an example of dream. स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में, so we all know. So after coming to the waking state, we all will declare that it is not there. स्वप्न का सारा प्रपंच, including me notion, including you in the world, it is misconception. Okay, so who can say when did happen? So in the dream it continued, so we don't know when it started, this misconception. In the dream you may be in some other world. So you might have traveled in Africa or whatever. You will not be in your place, your own place. You might be there somewhere. That is misconception. Obviously, it is. No one will tell that it is a right conception. So who can tell that when it has happened and when it is going to? Anyone can tell when it's going to end. It will end only after you wake up. But at that time, you will not know when it is going to end, when it is beginning, when it begins. That is one example, because it is in our own experience, what Acharya told, Anadir Ananto. Second experience, second answer, this question is itself is not relevant.
when Adhyasa started, that question itself is not relevant. Why it is not relevant? Because sir, this question only applies when there is adhyas or maya. Because if there was no maya, there would not be this question. Can you The further time clarify? itself is an adhyasa. Correct. Very good. Okay, The okay, okay. काल जो है, समय जो है, that itself is in the realm of Adhyasa. Forget about this. Forget about Shastra. What is the definition of time? First of all, in the world, Laukika world, what is the definition? What is time? What is time? First of all, Passage of experiences. so time means what? It has got seconds, minutes, hours. So how it is defined? On what basis it is defined? Rotation of the earth in its axis. Movement of sun and earth, positioning of movement of sun and earth. If you go to the Mars, the same time will not be there. So it is relative. सापेक्ष है ये, सापेक्ष, ये काल जो है ये सापेक्ष. In Navaratri, we will celebrate Kalaratri. कालरात्रि, that means देवी को हम काल से रूप से हम देखता है, वो काल से अतीत है. वो काल जो है, सापेक्ष का काल जो है, वो देवी से ही आता है, क्योंकि वो प्रकृति. देवी मतलब क्या है? वही स्वरूप हम प्रपंच में देख लिया तो वो देवी का स्वरूप ने दिखता है. वो काल जो है वो काल रात्रि स्वरूप है. मतलब एक काल जो है, ये डेफिनेशन का काल. So without relating to anything, we can't tell this is a time. So that's why our rishis at that time itself has told, if you go to the different lok, Brahma lok or any Indra lok or the different lok, the time will differ. You also have an example, no? Who is that? Balram's wife's father. So he will go to the world, Swarga, and he will come back to this world. At that time, no one will be there. So that is and that story will be there. The many stories are there, like Muchukunda story is also there. So that means Muchukunda has done the war with the Devat, I mean, against the Asuras to protect Devendra. So after he came back, so his family will not be there. So that way he will be blessed with the sleep. Okay. So those kind of stories is that means what? Time is always relative. The definition of time in the Laukika also, if you go on investigation, that concept of time itself will not there in the world. When it comes to here, Shastra, so that itself in the Kshetra says a realm of avidya. These things and all, even though it is simple, we have to contemplate more. So for that reason only, so see, when we contemplate more on the Shastra, we'll get interest to do sadhana. Why we won't continue with the sadhana? That is, we will not contemplate the Shastras properly, or will not contemplate the instruction of the Acharyas properly. So if we contemplate, we will get interest to do sadhana, because we have to achieve higher. Okay. So this time itself is in the realm of avidya. That's why, so this after which will be defined, we can't define this avidya in respect to the time. So that is, the question itself is not relevant. Another thing. Okay. And ये प्रमाण अध्यास, ये लौकिक में अध्यास हो गया तो हम उसका प्रमाण देखता है. प्रमाण मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ दिस light, partial light, this misconception happened on the rope.
and on the seashell. So if sunlight falls on the seashell, it will appear as a silver. Okay. So the praman क्या है, ये अध्यास का प्रमाण क्या है, वो sunshine which fell on the seashell. इसलिए so you misunderstood the seashell as a silver. इसका प्रमाण है. ठीक है. ये जो अध्यास जो है इसका प्रमाण क्या है? This is where all the Vyakhyanakaras, post Shankara's Vyakhyanakaras did. So they misunderstood and they written the Vyakhyanas as per their own thinking. So that is because just like how we told the time is in the realm of avidya, this pramana vyavahara, this is also a pramana vyavahara. A pramana, pramatra, prameya, vyavahara, this triputi is in the realm of avidya. So that's why, so that question itself is not relevant. So we should not, it is not like, we should not ask the question. So if you are asking any question, that should be relevant. So this has come in Brihadaranyaka Upanishad, Vidagdha Shakalya. So Yajnavalkya, for Acharyas, you can ask any question to know the self, but it should be relevant. Irrelevant questions, if you ask, your head will go. That example is given. We should not be afraid of that. So if you are real aspirant, you can ask any questions, but it shouldn't be like asuric questions, just like how other religions is asking the questions. It should not be like asuric questions. Okay. So here we shouldn't, it is not relevant to find the reason for avidya और द प्रमाण ढूंढना जरूरत ही नहीं है. अध्यास का प्रमाण क्यों हुआ, अध्यास क्यों हुआ, जैसे कोई एग्जाम्पल में वो मिसकॉन्सेप्शन क्यों हुआ, वी कैन आइडेंटिफाई दैट. यहाँ मिसकॉन्सेप्शन क्यों हुआ, वो आचार्य हैज टोल्ड इतरेतर अविवेकेन, दैट्स ऑल. So see, for the child, if it tells 5 ones are 5 table, so it is good. But if she tells that I don't know, it is just doesn't know, that's all. He doesn't know. So we, unless and until Shastra or Acharya tells that this Adhyasa has happened, you have to get rid of this Adhyasa. We have not thought of that. Now we have got that knowledge and we have to do the sadhana and get realized in the self. Okay, that's all. Not knowing, that's all. So Adhyasa has happened, we have not known, so we have to just get rid of that, that's all. We shouldn't waste our life in finding the reason for that, because the reason का कारण जो है, रीजन का वस्तु जो है, ये सभी जो है ये अध्यास का क्षेत्र में ही है. Okay, that is an important thing. Okay, this and all are explained in Swamiji's book सुगमा जो है ये संस्कृत में, और ये कन्नड़ में अध्यास भाष्यार्थ विमर्शा जो है, और सूत्र भाष्य तत्वार्थ विमर्शिनी, वो सभी जगह में ये हमारा स्वामी जी, मतलब क्या है, हमारा स्वामी जी he has not find any new thing over here. So whatever Shankaracharya has told in the Adhyasa Bhashya, he has codified, and for us to understand, he has correctly point wise he has written, that's all that I am telling over here. Okay, that is on the Adhyasa, that is in the realm of these things. And then I have not taken any questions till now. So whatever I have done in the past,
So I've just ended after 10 o'clock. I not take any question. I have not took any questions. Do you have any questions till now? Or else should I continue with the study circle for Avastatraya? And Shivansh and Smriti, you had some question, you got clarified over phone. उसके Hello. बारे में हाँ सर ये जो टाइप्स ऑफ कर्मास बताए थे आपने, क्या कुछ डिस्टर्बेंस है क्या है? हेलो, हाँ या बोलिए. हाँ सर ये जो आपने टाइप्स ऑफ कर्मास बताए थे उसका प्रारब्ध एंड ऑल से कुछ लेना देना है क्या? प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, आगामी कर्म, वो कर्म, ये शास्त्रीय कर्म नहीं है. प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म वो अलग है. ये उसके बारे में क्या है क्वेश्चन? लेना देना मतलब क्या है? मतलब हाँ, ये इसमें और उसमें डिफरेंस है. ये क्यों डिस्टरबेंस आ रहा है? या आर यू मूविंग सम वन जस्ट स्पीक? मे बी ईयर डिफरेंस पूछना था, डिफरेंस क्या क्या डिफरेंस प्रारब्ध दोनों संचित कर्म का? नैष्काम्य कर्म एंड ऑल में और ये प्रारब्ध संचित. नैष्कर्म्य कर्म इज आत्मज्ञान ही नैष्कर्म्य कर्म है. निष्काम कर्म इज डिफरेंट, नैष्कर्म्य इज डिफरेंट. ओके, निष्काम कर्म is so doing Karma the yoga. karma without any putting your eyes on the fruit of result. Okay, and नैष्कर्म्य सिद्धि सो वो स्वरूप में स्टैंड पॉइंट लेने के बाद वहां वो कर्म का कर्म नहीं है उसमें, क्योंकि ये कर्म जो है ये अध्यास के बाद आता है, मिसकॉन्सेप्शन के बाद आता है. वो स्वरूप में कर्म का कर्म ही नहीं है. इसलिए जस्ट लाइक इन अ डीप स्लीप स्टेट विल नॉट बी हैविंग एनी एक्टिविटी, दैट्स व्हाई कर्म नहीं है उसमें. वो स्थिति जो है, so the state is naishkarmya. Okay, there is a difference from naishkarmya and nishkama karma. Okay, और क्या डिफरेंस चाहिए? सर इस मतलब ये तो आपने थैंक यू एक्सप्लेन कर दिया. मेरा मेन क्वेश्चन था कि ये नित्य, नैमित्तिक एंड नैष्कर्म और प्रारब्ध एंड ऑल में, नित्य प्रारब्ध नैमित्तिक. संचित में क्या फर्क? हाँ, प्रारब्ध संचित वो अलग है. ये जो शास्त्रीय कर्म है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और आगामी कर्म जो है वो शास्त्रीय कर्म है. वो ये जो प्रारब्ध, संचित और आगामी कर्म जो है वो शास्त्र से ही हमको समझना है उसको. पर इफ यू हियर शास्त्रीय कर्म क्या होता है, इफ यू वोंट बिलीव so then it is fine, you can your life will continue. But this संचित कर्म, आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म जो है, so that is our daily, it will happen. Even if you won't believe or not, it will happen. It will not ask you whether it is required or not. प्रारब्ध आगामी कर्म जो है वो आपको चाहिए या नहीं, वो नहीं बोलता है. We have to experience that. It will not even ask whether you are a Hindu, Christian or Muslim, or you have taken birth in anywhere else. Okay, so that will happen. So punariti janam, punaripi maranam. So one after the other you have to take, not necessarily human birth. So prarabdha, or not different from prarabdha karma, sanchit karma, agami karma and all. Shivansh and Smriti? Yes sir, yes sir. Okay. So that is different. It is inevitable. That is a phala, right? Phala of your previous karma rather than the karma you're doing now, right? Whatever karma you do, that will add up. That is agami karma. So that is what. So just if I want to summarize that, so sanchita karma is the whole bunch of karma which you have done in the past, whatever. So out of that sanchita karma, one portion of the karma, it is in the prarabdha. If sanchita is like this bigger, so we can't say that, we can't predict any size of that. Just for the explanation person, if I'm telling this, sanchita karma, if it is bigger,
Only some small portion has come here, and it has taken this birth in the human birth. So it was in this human birth, it is also you will be having the relation and the word, and the time is also fixed in the prarabdha. We never know when we'll go. That also will be there. When you take a birth, you will come up with the end also, when it is going to end. Okay, after completing this prarabdha, so at that time itself, you will get ready for next birth. Okay, that and all is told in the Aparakarma and all. So how so after getting ready only you will leave this body. Okay, next another prarabdha will come. This will exhaust, another prarabdha will come. But while exhausting, what we will do, we will also add up another karma, more karmas. Whenever we something, we'll be having desire on that. So if that desire is not satisfied in this birth, you will take birth, another birth to satisfy that desire. That samskara will add up. And papa punya, accordingly it will add up. So whatever papa or punya, both, so that will get add up in this, while exhausting prarabdha karma, that will get add up. So it will add to the sanchita. Okay, whatever sanchita bigger size is there, it will add to the sanchita. That is agami karma. And again, you will take a birth again and again. That is on the prarabdha, sanchita and agami karma. Thank you, sir. Thank you. So then anything other than this? Okay then. I will continue on the avasthatraya. So, क्या है ये अवस्थात्रय? अवस्थात्रय, त्रय मतलब क्या है, ये अवस्था मतलब क्या है? स्मृति आप बोल सकता है क्या? यस सर। हाँ, अवस्था स्टेट और त्रया मीन्स तीन, जो हमारे तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन्हीं को कहा गया है अवस्था त्रय। त्रय, त्रय मतलब तीन, वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ठीक है, वो क्यों है वह अवस्थात्रय का जो विचार है, उससे क्या होगा, क्यों है शास्त्र में? स्मृति, हाँ, continues because till now Shivansh has told. यस सर। अवस्थात्रय प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया मतलब क्या है? पहले प्रक्रिया मतलब क्या? प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। Yes, correct. It's a process, that the methodology. So the methodology which is adopted in Shastra to realize the self is called prakriya. Prakriya. अवस्थात्रय जैसा क्या क्या प्रक्रिया है शास्त्र में? शिवांश, हाँ, क्या स्मृति बोलिए। वेकिंग स्टेट का मतलब नहीं, अवस्थात्रय एक प्रक्रिया है। ये वेकिंग, ड्रीम और निद्रा, वो जो एक प्रक्रिया है, मेथडोलॉजी, वो जैसा और क्या मेथडोलॉजी है? शिवांश, आप ही बोला था एक प्रक्रिया, उसको बाल पता है करके। सर अवस्थात्रय है और एक नेति नेति भी इज अ मेथडोलॉजी। हाँ, ओके, श्याम के नटल। एंड एक और है पंचकोश। हाँ, वेरी गुड, पंचकोश प्रक्रिया है। दृग दृश्य विवेक प्रक्रिया है। दृग दृश्य विवेक, राइट, दृग प्रक्रिया है। कार्य कारण भाव प्रक्रिया है। सामान्य विशेष ज्ञान प्रक्रिया है। अन्वय व्यतिरेक प्रक्रिया है। वह सारा प्रक्रिया वेदांत में है, पर ये जो अवस्थात्रय प्रक्रिया जो है, ये राजमार्ग है। शंकराचार्य ने बोलता है कि अवस्थात्रय जैसा ये राजमार्ग है। क्योंकि समझने के लिए बहुत आसान है और सूक्ष्म भी है, इसलिए अवस्थात्रय प्रक्रिया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अवस्थात्रय प्रक्रिया में ये जागृत अवस्था मतलब ये आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आया है। कैसा
एक्सप्लेन करता है अवस्थात्रय का मतलब I will only start. So it will tell ओम इत्येद अक्षरमिदगम सर्वम. ये सभी जो हम देख रहा है ये ओमकार ही है. ओमकार मतलब क्या है? नाम है. वो जो परमात्मा को कोई नाम नहीं है, पर उसका एक नाम देना है तो वो ओमकार है. That's why it is called अभिधान. अभिधेय मतलब ओमकार. So for example, your name is शिवांश. So किसको बोल रहा है शिवांश? वो किसी और वस्तु को जानने के लिए नाम है ना. वो शिवांश जो मूल है ये शिवांश है. So ऐसा अभिधेय मतलब क्या? ब्रह्म स्वरूप जो है वो अभिधेय और अभिधान उसका नाम है ओमकार. मतलब ये सभी ओमकार है. और भूत भविष्य वर्तमान जो में है वो सभी ओमकार है. कालातीत जो है वो ही ओमकार है. उसके बाद उसका समझने के लिए ये श्रुति मांडुक्य उपनिषद बोलता है कि अयम आत्मा ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा. वो ढूंढने के लिए हम so we have to inquire in yourself. So we shouldn't just like modern scientific world, if there is an inquiry it will be outside from yourself. So that is the research inquiry you will do, but it is not here. It is not like that. You have to inquire within yourself. Okay, that's why I am Atma Brahma. So how? Swayam Atma Chatushpat. The Chatushpat मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरिया बोलता है. जागृत मतलब जागृत में क्या क्या होता है, जागृत अवस्था में क्या क्या चीज रहता है. स्मृति? corporeal plane and Very good. Corporeal plane. material plane. In Hindi, corporeal plane in Sanskrit, what is corporeal plane? Adhyatma. Adhyatmika. Adhyatmika prapanch. What is that? Sir, Body, Adhyasma mind, Prapanch. complex. Yes, sir. Body, mind, and complex. So we have entire. So we when we say we identify Sir, body mind क्या? body, mind, and so body, mind complex. Body, mind complex. Karya Karana Sanghata. So because when we identify ourselves, we take our identification with a mix of body and mind complex. So Adhyatmika प्रपंच. और क्या है? Material plane, संसारिक प्रपंच. हाँ, मेटेरियल प्लेन मतलब आदि ಭೌತಿಕ, ಆದಿ ಭೌತಿಕ. ಭೌತಿಕ. So what is that ಆದಿ ಭೌತಿಕ? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತದ್ದು. So I am there, this body mind complex. So related to that this world is there, correct? So I and this world, entire world. Okay. So भौतिक मतलब भौतिक वस्तु जो है, the solid things whatever we are seeing over here, it is made up of how many elements? 5 elements. 5 elements. Okay. पंच तत्व क्या 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 है वो पंचभूत? Air, fire, soil, sky. पृथ्वी, आकाश, Yes, sir. Earth. Yes. जैसा. ओके, ठीक है. ये पंच तत्व से ये सारा प्रपंच है. ओके. हम जो देख रहा है ये प्रपंच को, ये आदि भौतिक प्रपंच. और क्या है उसके बाद? Divine plane. Divine plane. So that will दैविक only through Shastra. So this anyone can experience this.
So divine plane will come only through Shastra. What is that divine plane? Adi Daivika. What is that? Planetary. So, let Smriti answer that. So because ये name में भी है, ये explain कर सकता है. आदि दैविक मतलब दैविक. Sir, which is divine, like sky and universe. हाँ, that आदि भौतिक में होगा, वो हो गया. हाँ. Okay, ठीक है. Okay, Sham, can you explain? Sham or The Shivansh? self. Yeah, The Shivansh. self. Not self. Not self. ये सभी चीज जो है, इंद्र वायु. हाँ, वो देवतास. So if any activity to happen, so just like the electrical equipments, it will not run without electricity. So just like that, in the office also, if any office has to run, it has to have different levels like manager, worker, security, and many things should be there to control the operations. Likewise, here also, for the world to run, without that Daivika Shakti, nothing will going to happen. So that's why I told the difference between the Aditya, Devata and Aditya. The sun, whatever we see, is Bhautika Surya, Bhautika sun. So, but the Devata inside, that Aditya, that is called Aditya Devata. So, the word that we can't see. So, हम देवता लोगों को हम ये आंख से हम नहीं देख सकता, पर वो है, उसी के हिसाब से ही हमारा वो सभी लाइफ चल रहा है. हमारा ही नहीं, वो सारा प्रपंच का जो एक्टिविटी है, ये देवताओं से बिना ये नहीं चल सकता. ये देवता, ये सारे देवताओं को कंट्रोल, ये जो बृहस्पति करता है, क्योंकि वो देव गुरु है. बृहस्पति का की कंट्रोल ये प्रजापति करता है. ये प्रजापति सभी देवताओं को शक्ति देता है. ये जैसा है बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद and all, if you learn, so this concept will be told like in that. So in Bhagavad Gita also, Bhagavan has told in the 18th chapter regarding this. Okay, so just if you want to simply understand this, so for us to lead a life, any activity to happen, so there will be a presence of Devata. Okay, so from the Devata, so that's why that belief is very important. So because they are there, so because of them only it is happening. So they are ruling the world. If they won't rule the world even for 1 second, so we will not be there at all. Will not be there at all. So सारा जो व्यवस्था जो है, ठीक तरफ से देवता लोग कर रहा है, हम नहीं कर रहा है ये सभी ठीक तरह से. So it is the Agni, it has to go upwards only. So Jal, it has to go downwards only. It is happening. So that's why Acharya has told Pratiniyata Desha Kala Nimitta Kriya Karaka Palashrayasya Manasa api Achintya Rachanarupasya Asya Jagataha. It is well regulated by time, space and causation. And so in the world itself, so we can't even think by mind, not Paramatma. So the activity of this world itself, we can't even think by mind. ऐसा है ये. So इसीलिए आदि दैविक प्रपंच. Okay, ये हो गया. हम so we will continue with the study circle on Friday. We just saw this 3 kind of things what is there in the Jagrata Avastha. So we'll continue in the next class. Whatever questions you have, that also you can ask in the next class. Om Namo Brahmadibhyo Brahma Vidya Sampradaya Kartrabhyo Vamsha Rishibhyo Namo Mahabhyo Namo Gurubhya
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रणाम सर। प्रणाम।